एनीवन, कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए? 30, अरे नहीं 30 कम तो नहीं, अच्छा 40 कर दो, अरे 40 नहीं नहीं 50 कर दो, अरे 50 नहीं नहीं यार 60 कर दो। हमारी ह्यूमिडिटी 10, 20, 30, 10 के वेरिएबल पे चलती है। वाई नॉट 35? Why not 36? Why not 39? There is absolutely no explanation for that. Same has happened to our fan and pad systems, जिनमें ऑटोमेशंस लगाई गई हैं कि ये 40 डिग्री पे कट जाएगा जी पानी, ये 35 डिग्री पे जी फैन कट जाएगा। अरे बेचारे प्लांट से तो पूछो, वाई हु आर यू टू डिसाइड 40 डिग्री पे 40 ह्यूमिडिटी पे कट जाएगा? No automation can work properly unless and until the behavior of the plant is taken into consideration. ये सब ऑटोमेशन जो हम कॉमनली फैन एंड पैड सिस्टम में करते हैं बेकार हैं, कोई आपको इनसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है unless and until you know how to operate it. So climatic control and irrigation management in high-tech nursery, that is what I was supposed to tell you, I was supposed to discuss today. Now what is a plant? What is a plant? देखिए मैं, plant is a live tissue, plant is this, धमकाना धमकाना, there are so many things into it. But to me, plant का comparison best can be done with a mobile phone. Both are same, और both are बेवकूफ़. प्लांट भी बेवकूफ़ है, मोबाइल फ़ोन भी बेवकूफ़ है. प्लांट को आग में डालिए वो निकाले, खुद नहीं भागेगा वहाँ से. मोबाइल फ़ोन को आग में डालिए वो वहीं झुलस जाएगा, वो झुलस जाएगा. दैट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट एंड ए ह्यूमन बीइंग. मेरी उंगली अगर आग में जाएगी मैं खींच लूँगा. नाउ हाउ डज दीज मोबाइल फोन्स वर्क? हाउ डज दीज प्लांट्स वर्क? बिकॉज दे हैव अ सिस्टम इंस्टॉल्ड. प्लांट को वो नेचर ने दिया है, उसको वो आईटी सेक्टर के या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने दिया है. दैट्स व्हाई यू, इन ऑर्डर टू मेक योर mobile phone work properly, you update the software, you maintain the system that is imbibed inside the mobile to keep it updated, to keep it functioning. Same way nature has provided a system into the plant. दो सिस्टम उसने दिए हैं. एक सिस्टम की वजह से वो पानी लेता है, एक सिस्टम की वजह से वो खाना लेता है. अगर आप वो दोनों सिस्टम्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका प्लांट नहीं चलेगा. और उन दोनों सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए व्हाट यू नीड इज टू प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट. यू मे प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द फूड, यू मे प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द वाटर, बट इफ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज नॉट देयर, यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट, यू कैन नॉट ग्रो ए प्लांट. बिकॉज आप सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं कर रहे हो तो उसमें वो ऐप कहाँ से आएगी? वो तो आएगी ही नहीं. जब इसको आप, इसके सिस्टम को आप बराबर नहीं रखोगे तो नहीं आएगा, प्लांट नहीं चलेगा. एंड दिस इज द कॉमन थिंग. प्लांट्स डोंट हैव हार्ट्स, सो डज मोबाइल्स हैव. ना उसके पास दिमाग है ना इसके पास दिल है. हमारे पास दिल भी है, दिमाग भी है, इन दोनों के पास नहीं है. ना दिल है ना दिमाग है. अदर देन दैट दे आर एज गुड एज वी आर. But then how does these function? These function because of a system that is imbibed by nature into the plant and by a software engineer inside it. And you need to update that regularly so that that system stays alive inside the plant, and that system, the growth, ultimate growth of that plant is because of that system. Nowhere else. और उस सिस्टम जो है उसमें सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी काम नहीं करती है, उसमें लॉट ऑफ फिजिक्स इज ऑल्सो, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल while the growing a plant. So my dear gentlemen, my dear, I cannot call you brothers and sisters because my wife is sitting in the audience. So my dear friends, let me tell you. so my dear friends, let me tell you. Growing a plant is not a rocket science, at least for us, should not be we should not consider it. Rocket science, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो हमारे रॉकेट साइंस का जवाब. डॉक्टर ब्रह्मा सिंह बैठे हैं, वो रॉकेट साइंस उनके लिए है. हमको हमारी हद में आके प्लांट को चलाना है, 2 पैसे हमको मिल जाने चाहिए, दैट इज ऑल. आई डिड माई फर्स्ट लॉट ऑफ सीडलिंग्स फॉर फार्मर्स. राधिका इज देयर, राधिका हैज सप्लाइड मी द सीड्स. उन फार्मर्स को राधिका ने सीड दिए हैं, शी इज द सीड सप्लायर. मेरे को 5 लाख सीड दिया 3 फार्मर्स ने, 5 लाख सीड दिया 3 फार्मर्स ने सीडलिंग बनाने के लिए, वेजिटेबल सीडलिंग्स के. इट वाज माय फर्स्ट ईयर. आई गेव देम ए जर्मनी. द प्लांट्स आई रिटर्न टू देम वाज 97.8%. Anyone who gave me 100 seeds, I returned him 98 plants. All healthy, not even one thrips or mite or any disease with it. Nothing with it.
Why does it happen? It happens if you follow the basic science, if you follow the fundamentals, and second thing, if you are focused towards it. If you are focused towards it. So there are three processes. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. Plant photosynthesis, plant respiration and transpiration. ये softwares हैं plant के. You as a grower have to ensure that these all three processes are being taken care of every moment, 24/7. The first two I will forget because I have been asked to be within time. The first two, but the most important, the third one, that is the plant transpiration. What does plant transpiration technically means? आप सब लोगों को मैं हिंदी में बताता हूँ. प्लांट जितना पानी लेता है उसका 10% वो यूज करता है और 90% वो हवा में फेंकता है. This is plant transpiration. It uses 10% of the water and 90% it leaves inside the. आपको अपने ग्रीन हाउस में ये इंश्योर करना है that your plant is transpiring to that extent. अगर आप अपने ग्रीन हाउस में उसको इंश्योर करेंगे, टेक इट guaranteed, I can give you in writing that your plants will grow well. Ensure plant transpiration, maintain water balance. The uptake of water and the outgoing amount of the water should be balanced. Because plant uses only 10% of the water, 90% it has to move out. If it transpires properly, it will grow properly. If it doesn't transpire properly, it will not grow properly. And for effective and efficient transpiration, you need to maintain a very good environment inside your greenhouse. That is of prime importance. उसके लिए ह्यूमिडिटी पे आपको काम करना चाहिए. ह्यूमिडिटी को समझना चाहिए क्या होता है ह्यूमिडिटी और कैसे ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके you can control the plant transpiration. I will give you 5 tips. Last of all, I will give you 5 tips that will help you in taking care of your plants inside a greenhouse. मैं थोड़ा सा देखिए, transpiration is basically a pull. It is an inward pull. It's an inward pull which starts with the root. It starts with the root. और फिर goes to the stem, then to the leaves, and from leaves this water moves out into the atmosphere. This is a continuous process. It's a 24/7 process. Continuous process है. And if the greenhouse environment is not worth it, this process will stop. And your plants will stop growing. एक छोटा एग्जाम्पल है आपके लिए, very easy and simple to understand. Suppose you are staying in an apartment in the ground floor, all alone. आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, खाली हैं, अकेले हैं, और आपके पास में पानी 100 लीटर आपकी कैपेसिटी है पानी के टैंकी की, आपने उसमें 100 लीटर पानी रखा है, and all of a sudden you get a notice that tomorrow there won't be any water supply. So what you will do? You will try to store more water. Maybe you have stored now 25 liter, 25, another 100 liter you have stored. Now there is another family who is staying in the first floor, and they didn't get this notice. उनको पता नहीं लगा कि ऐसे पानी नहीं आएगा. So all of a sudden में जब उनका पानी खत्म हो गया, उनकी 500 लीटर की टैंकियाँ खत्म हो गया, the first thing they will look for water, they will ask the neighbor कि भाई can you help me? So fine. आपने बोला जी ठीक है, मैं आपको 25 लीटर पानी दे सकता हूँ. कुछ समय उनका तो 25 लीटर से कुछ होना नहीं है, बड़ी फैमिली है, उन्होंने फिर आपको अप्रोच करा, फाइन, आपने फिर से दे दिया, फिर उन्होंने अप्रोच करा, आपने फिर से दे दिया, फिर उन्होंने आपको अप्रोच करा, आपने फिर दे दिया, एंड 100 लीटर से उनका कुछ नहीं होने वाला है, दे विल अगेन अप्रोच. नाउ यू विल स्टॉप, यू विल से नो, बिकॉज यू नीड टू कीप वाटर फॉर एट योर ओन प्लेस. अगर आपके पास अपने लिए पानी नहीं होगा तो आप अपने पड़ोसी को नहीं दोगे. पहले टू बी जेनरस आपने दे दिया उसको, लेकिन उसके बाद में जब आपके पास उतना ही पानी है तब आप पानी ऊपर देना बंद करोगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इनसाइड अ प्लांट. When the transpiration, when the water demand of the plant is too high, the roots stop taking the water. They say, I'm sorry, I don't have capacity to provide you this much of an water. So I am not going to take any water because मेरे को अपने लिए भी रखना है.
So in transpiration, you need to create a balance between uptake of water and the water that is being transferred by the plant inside the greenhouse environment in the form of water vapor. This balance is to be maintained, and this balance can only and only be maintained when you maintain proper humidity inside your greenhouse. कब क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं. When these plants take water and then this water gets transferred, ये continuous process है. When this continuous transpiration is taking place, what is going to happen? इस मटके में जब हम पानी रखते हैं, उस पर हवा चलती है, बाहर रखते हैं, तो पानी ठंडा हो जाता है because of evaporation. Evaporation में latent heat वो consume करता है. थोड़ा साइंस है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उस पर, लेकिन पानी ठंडा होता है, यह हम सबको मालूम है. पानी ठंडा होता है evaporation से. Same thing happens to a plant. Same thing happens to a plant. जब plant continuously transfer करता है, तो plant का जो अपना temperature है, that will be lower. Plant temperatures will be lower. जब वो ट्रांसफर करेगा, बार बार करेगा, तो उसका लोअर होगा. दिस इज एन इंडिकेशन फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर रनिंग देयर पैन एंड पैड सिस्टम और दे आर डूइंग देयर कल्टिवेशन इनसाइड अ ग्रीन हाउस. Whenever you enter into side a greenhouse, take an infrared thermometer along with and make sure that you check the leaf temperatures and make sure that your leaf temperatures are lower than the atmospheric temperature inside the greenhouse. अगर आपके ग्रीन हाउस का टेम्परेचर 40 डिग्री है, आपके प्लांट का टेम्परेचर 35 डिग्री होना चाहिए. If that is happening, that is an indication that your plants are transpiring well. अगर वो नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, ये आपको देखना चाहिए ट्रांसपायरेशन के उसमें सिलसिले में. Water balance, as I told you, you have to maintain proper water balance. 100% water uptake is to be balanced with the output. 10% will be used by the plant and the 90% will be transferred, evaporated inside the environment, inside the atmosphere. And humidity is the most important thing for that. ह्यूमिडिटी को पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, ह्यूमिडिटी को समझिएगा. बाद में मेरे इसमें फ़ोन नंबर भी लगा हुआ है. माई ईमेल एड्रेस इज़ ऑल्सो देयर. एनी टाइम यू फील लाइक कॉलिंग मी, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, call me anytime. If you want to ask me a question, ask me anytime. Write me a mail. Don't hesitate. Tough. ये एक हफ्ते, ये नॉर्मली मैं ट्रेनिंग्स में एक हफ्ते में पढ़ाता हूँ, यहाँ आधे घंटे में बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. Increasing temperature is one of the very important tools. Note down my words. Increasing temperature inside your greenhouse is a very, very important tool for managing greenhouses. We are always looking after decreasing the temperature. When you are decreasing the temperatures, your humidity will be very high. And when your humidity is very high, your transpiration rate of the plant will be absolutely zero. Your plants will not transpire. In order to ensure proper transpiration of the plant, you need to keep your humidity under control. And best of the tools, particularly for those coastal areas like Chennai or any other place on the coastal lines, increasing temperatures inside the greenhouse is at times the best tool to ensure proper transpiration. So don't look after decreasing the temperature every time. And another thing I wanted to tell you, this is again I am telling you that please don't use green shade nets in your greenhouse. Please don't use green. Plants don't absorb green light. You should, in a country like India, lower light areas, use black nets, higher light areas, lower solar radiation, use white shade nets, and higher solar radiation, use black shade nets, never use green. So, one point. Important. Why is it important to bring fresh air inside the greenhouse? क्यों आपको बार बार fresh air को greenhouse के अंदर लाना चाहिए? How important it is और कैसे इसको किया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी. See, air contains 78% nitrogen. Air contains 21% oxygen. Together it makes 99%. And this 99% of the air is of no use to the plants. Plants के लिए इसका कोई use नहीं है.
अब बचता है हमारे पास में 1%, and 1% is others, और इस others में there are water vapor, argon, xenon, ये गैस and carbon dioxide. How much? 0.03 or 350 ppm of carbon dioxide. Now imagine the moment fresh air gets into your greenhouse, the amount of carbon dioxide in it, which is plant food, it is so low. It is so low that it will be consumed immediately by the plants. Now once it is consumed by the plants, the rest of the air that is left in the greenhouse is absolutely of no use to your plants. You need to take that air out and make sure that fresh air comes in. Unless and until you ensure the air movement out, the air from outside cannot get in. तो उसके लिए आपको हमें